your channel BioNeat Academy. So today we are here on the topic breathing. So this is very important for our NEET as well as NCRT. So first of all, let's clear our basics. So what is breathing? So process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. Little bit confusing, right? Okay, so the easy definition is the process in which air moves in and out of the lungs. Okay, so in air there are two components, O2 and CO2. Means exhaling of oxygen, inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is known as breathing. So back to this process. So the process of respiration is that pulmonary respiration. So what is pulmonary respiration? Intake of oxygen and release of CO2. So pulmonary respiration takes place, then the diffusion of oxygen and carbon dioxide. So where the diffusion occurs in alveolar membrane. So as we know that oxygen and CO2, they are gases. Okay, so gases move from high concentration to low concentration. Okay, so the next step is transportation of gases by blood. So the diffusion of oxygen and carbon dioxide take place, and transportation of oxygen and carbon dioxide of gases means they are gases, they are transported through blood. So then diffusion of oxygen and CO2 between blood and tissues, then cellular respiration occurs. So this is the full process of breathing, and we in this will deal about mechanism of breathing. Okay. Hello guys, welcome to माय चैनल बायोनीट एकेडमी. सो आज हम करने वाले हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. सो सबसे पहले आपने इसके बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे जो मैंने आपको बताए थे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग की हमने ये स्टेजेस लिखी हैं कि ब्रीदिंग हैव टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो आप इन वर्ड से तो जान ही चुके होंगे कि इंस्पायरेशन क्या होता है. इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ अंदर लेना, मीन्स कोई बॉडी के अंदर जाना. लाइक इंस्पायरेशन में क्या होता है, O2 हमारी अंदर जाती है एंड एक्सपायरेशन में CO2 हमारी बाहर आती है विद द हेल्प ऑफ लंग्स. दीज ऑल हेल्प विद हेल्प ऑफ लंग्स. ओके, सो इंस्पायरेशन सबसे पहले हम करते हैं कि दैट इज इन व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेयर, जिसके एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज दैट lung pressure, you can say, right? So this is about when the lung pressure is less than the atmospheric pressure, then it is called inspiration, and expiration is when intrapulmonary pressure means lung pressure is higher than atmospheric pressure. Atmospheric pressure को आप बोल सकते हो जो environment में pressure found है, like CO2 and other gases का. Okay, so let's talk about inspiration, right? So what is inspiration? Inspiration is the contraction of diaphragm. So आप साइड में देख रहे होंगे ये डायग्राम NCRT. Please, I request you to open the NCRT. Okay, inspiration is the contraction of diaphragm. Contraction मतलब tight. Like अगर, let me give you an example here. Like this is diaphragm and there are lungs. It's only for your reference. When this diaphragm, like this is lungs, it contracts, it come nearer. Okay, so that is inspiration. That is contraction of diaphragm which increase volume of thoracic chamber into anterior posterior axis.
नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स. जो हमारी रिब्स है, मतलब जो हमारा ढांचा है, जहाँ पे लंग्स के आगे जो रिब्स होती हैं, डैट कम लिफ्ट अप, वो लिफ्ट अप हो जाती है, मीन्स ऊपर हो जाती है थोड़ी. ओके, सो अगर हम इसके ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो डैट इज इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम. देयर इज इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम डैट कॉज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. हम कह सकते हैं कि थोरेसिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी वॉल्यूम. आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि अगर टीवी बढ़ेगा, टीवी मीन्स अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगी. पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है सबसे पहले तो? सो पल्मोनरी वॉल्यूम इज द वॉल्यूम लाइक जहाँ पे रिब्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है. ओके, एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम दस डिक्रीज इन इंट्रा-पल्मोनरी प्रेशर. अब जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पल्मोनरी प्रेशर के. इसका मतलब क्या है? अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी तो पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगी तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट इंस्पायरेशन. ओके, I hope this step is clear to you. So next is expiration. So expiration, what is expiration? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब CO2 रिलीज होती है that is called expiration. So relaxation of muscles and diaphragm. Muscles कौन सी? intercostal muscles. अब हमारे इंस्पायरेशन में क्या था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसमें एक्सपायरेशन में रिलैक्स किया. इनमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, नॉट एन इशू. ओके, सो सेकेंड इज रिड्यूस थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम. सो इट रिड्यूस थोरेसिक वॉल्यूम एंड इंस्पायरेशन में क्या था? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. ओके, लीड्स इन इंक्रीज इन इंट्रा-पल्मोनरी प्रेशर. सो इट एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इंट्रा-पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करता है. ओके, सो डैट कॉज एक्सपर्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स. जो एक्स्ट्रा एयर है लाइक CO2 वगैरह वो एक्सपायर हो जाती है. अब हमने इंस्पायरेशन में हमने क्या किया था? डैट इज डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिसकी वजह से जो एयर है वो इंस्पायर होती है. इंस्पायर मतलब अंदर. कौन सी है? O2. अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि गैसेस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है. तो मीन्स अगर हम इसको देखें तो डैट इज O2 हाई टू लो, मतलब जो हमारी लंग्स है उनकी होती है हाई टू लो, सॉरी लो टू हाई. यस, सो दिस इज अबाउट ओनली एक्सपायरेशन. ओके, एंड अगली वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगी.